explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of grammar, and the name of the chapter is nouns, right? So हम बात करने वाले हैं nouns के बारे में. Now what are the nouns? We all know कि जो nouns हैं वो actually naming words होते हैं, right? So let us read the chapter very quickly and know more about them. So, we have already learned that a noun is the name of a person, place, animal or thing, right? कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो नाउन है वो एक्चुअली किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग का नाम है, राइट? Let us learn about the different kinds of nouns. तो जल्दी से इन सभी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें काइंड्स ऑफ नाउन दिए गए हैं जो कि एक्चुअली 5 होते हैं. Let us read them. So these 5 nouns are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and the material noun, right? All these are the 5 kinds of nouns. After that, we have in detail with the explanation of the proper nouns. So, अब ये proper nouns क्या होते हैं? Let us see. Read these sentences. So, Ravi has a dog. I bought this bag from Hyderabad. Right? So, यहाँ पर हमने देखा कि कुछ highlighted words हैं जैसे कि Ravi, dog, bag and Hyderabad. Right? So, let us see. The highlighted words in these sentences are nouns. कि ये जो highlighted words in sentences में दिए गए हैं, they are actually the nouns. The words highlighted in pink are the names of a particular people and places. कि जो भी words यहाँ highlighted करके दिए हुए हैं, जो कि है Ravi, dog, bag and Hyderabad, they all are actually the particular names जो कि places और people को दिए गए हैं, right? So, we can say that nouns that are the names of particular places, animals or things are called the proper nouns. कि हम कह सकते हैं कि जो भी नाम होते हैं जो कि स्पेशली दिए जाते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को, वो कहलाते हैं हमारे proper nouns, right? Now after that we have over here which is the common nouns. Now let's read about the common nouns from here. So it says, now read the sentences. तो अब यहाँ पर कुछ और sentences हमें दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़ते हैं. The boy lives in a city and my uncle and aunt took us to the zoo. So, अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? Let us see. We saw the highlighted words over here first of all, right? Boy, city, uncle, aunt and zoo, right? So the highlighted words in these sentences are also nouns. कि जो highlighted words हैं इन सभी sentences में ये भी actually हमारे nouns ही हैं, right? So they say nouns that are common names of people, animals or things are called the common nouns. तो ऐसे nouns जो कि actually बहुत ही ज़्यादा common नाम होते हैं हमारे people, person, place, idea या फिर things के, उन्हें कहा जाता है common nouns, right? They are for general names कि ये actually किसी भी general class या फिर वैसी thing को identify करते हैं. Now next we have the collective nouns. So let's discuss about the collective nouns. Now read these sentences. अब जल्दी से यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उन्हें पढ़ते हैं. So they say, he gave me a bouquet of flowers on my birthday, right? The gang of robbers escaped through this flight of stairs, right? So यहाँ पर जो collective जो nouns हैं, they are bouquet, gang and flight, right?
So the highlighted words in these sentences are nouns that describe a group of people, animals and things. तो ये जो highlighted words हैं इन sentences में, ये actually nouns हैं जो describe करती हैं पूरे एक group के बारे में, जो कि किसी person, animal या फिर things का हो सकता है. Right? Now, that stand for a group of people, animals or things are called collective nouns. Right? तो ये जो stand लेते हैं पूरे group के person, animals या फिर things के group के लिए, उन्हें कहा जाता है collective nouns. Right? Moving ahead to the abstract nouns. Now, what are these abstract nouns? Read the following sentences. तो अब जल्दी से इन sentences को पढ़ते हैं. The boy cried in pain. Pinky is an honest girl. Right? So, in the above sentences, the highlighted words refer to some feeling or quality. तो इन दो sentences में जो words हैं जो कि highlighted हैं, right? ये हमें कुछ ना कुछ बताते हैं about the feeling या फिर किसी quality के बारे में, right? So they say the words which express feeling, quality or idea are called abstract nouns. तो ऐसे words जो कि express करते हैं किसी ना किसी feeling, quality या फिर idea को, उन्हें कहा जाता है abstract nouns, right? We can only think of or feel them, but we can never touch or see them. कि हम सिर्फ उनके बारे में या तो सोच सकते हैं या फिर हम उन्हें फील कर सकते हैं, बट हम उनके बारे में हम उनको ना तो कभी देख सकते हैं ना ही उन्हें टच कर सकते हैं, right? All these nouns are known as the abstract nouns. Now we have a box, which is for no more. Abstract nouns are usually used in the singular form. Exceptions, memories, pleasures and experiences. कि abstract noun हमेशा singular nouns में ही use करते हैं, right? पर कुछ exceptions होते हैं जैसे कि memories, pleasures और experiences, ये अपने plural form में ही हमेशा use किए जाते हैं, correct? Now, coming up to the next one, which is material nouns. Now, what are these material nouns? So, read the following sentences. तो अब जल्दी से यहाँ पर जो sentences हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार. My bangles are made of gold, right? उसी के बाद we have bought a shoe rack made of wood, correct? So the highlighted words in these sentences are material nouns. तो जो highlighted words हैं इन sentences में उन्हें actually material nouns कहा जाता है, correct? The nouns that are sense organs, can feel, see, touch, taste and hear are called material nouns or the concrete nouns, right? तो कुछ ऐसे nouns हैं जो कि हमारे sense organs feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, see देख सकते हैं, taste कर सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है material nouns या फिर concrete nouns, right? Some other kinds of nouns. Nouns can also be divided into countable nouns and the uncountable nouns. अब कुछ और भी तरीके के nouns होते हैं, right? जो कि होते हैं countable noun और साथ ही uncountable noun. अब ये countable और uncountable noun कौन से हैं जल्दी से देखते हैं. So very first we have the countable nouns. Read these sentences. There are 5 flowers in the vase. Mother gave me some toys. Right? So हमने देखा कि कुछ words highlighted हैं जैसे कि flowers and toys. Right? So nouns like flowers and toys can be counted. तो हम देख सकते हैं कि जो ये nouns होते हैं जैसे कि हमारे
टॉयज और फ्लावर्स, इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं. दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स. वहीं ये हमें और भी कुछ बताते हैं. दैट इज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. वी यूजुअली राइट ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. कि जो नाउन्स हैं ये काउंट किए जा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है द काउंटेबल नाउन्स. हम यूजुअली अ या एन लगाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले. राइट नाउ they simply explain us that nouns cannot be counted are called the uncountable nouns. अब कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, just like hair, stars, right, milk, water, many other things जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं. So वो आते हैं uncountable nouns की category में. Just like we have over here, this is uncountable noun. Let us read these sentences. She spilled some ink on the book. Priya's hair is thick and long. Right? So, nouns like ink and hair cannot be counted. They are called uncountable nouns. कि जो nouns हैं जैसे कि ink और hair वो actually count नहीं किए जा सकते हैं. इसीलिए हम उन्हें कहते हैं uncountable nouns. Right? We usually write some or any before an uncountable noun. कि हम usually uncountable nouns के पहले some or any का use करते हैं. Right? So, that was all about the chapter. I hope you all are clear with the nouns as well as its kinds, and you'll be easily able to classify the various categories of the nouns. So, that was all from my side. I hope you all enjoyed it and you all gathered a lot of information from here. So thank you so much and have a great day ahead.